Yes, sir, you are audible. Yes, tell me. सर मैंने लास्ट 2 क्लासेस मिस कर दी थी, उसमें आपने क्या बताया था सर, आप थोड़ा ब्रीफ में बता देंगे? मतलब you can take the recordings also from the IGNOU, because these classes are recorded by the IGNOU itself, so you can get the recordings from there. Okay. Okay, sir. So today we are going to discuss different types of counseling. So we'll discuss counseling with regard to the HIV/AIDS, educational counseling, vocational counseling. Then we'll discuss about the child-related counseling. Then we'll discuss about the anxiety-related counseling, a counseling which is required in the case of addiction, substance abuse. So we'll start with the HIV or AIDS counseling. So how many of you are aware of like HIV or AIDS? Do you have any idea what it is all about? Sir, HIV is human immunodeficiency virus, basically, and AIDS is a syndrome. It includes many other complications. Okay, right. And basically, immune system is affected, and the body is not able to fight the normal pathogens. Okay. Even normal pathogens. Mm-hmm. And sir. So like before get into the counseling process, we should know about the problem very well. If you don't know the issue and the problem and what it is, how it is, and like what are the causes, what are the symptoms, and it's very difficult for the counselor to counsel the other person, right? So if you are dealing with the clients with the chronic health issues like HIV, AIDS, or cancer, before that you should know about the problem very well. Now tell me what you understand by HIV or AIDS. As you have mentioned, one is virus, human immunodeficiency virus, HIV, or AIDS stand for acquired immunodeficiency syndrome, right? Sure. So basically, जो AIDS है, that is an ongoing, or we will also call it a chronic condition, and AIDS is basically caused by the HIV, human immunodeficiency virus, and this HIV damages the entire immune system of our body, so that our body is not able to fight with the infections and diseases. And if it is not treated before the time, then it will definitely take it will almost destroy our immune system enough and convert into the AIDS and become AIDS. और क्या causes हैं, like how it transmits? Sir, through unprotected intercourse, transmission of infected blood, and social contact, maybe mother to child. Mother through during pregnancy also it can be spread. Okay. Body fluids. Through placenta. Through placenta. Placenta, when the mother is pregnant, through placenta, it can be transferred to the fetus. Okay. Anybody else? During blood transfusion. During blood transfusion, okay.
and syringe through needles injections. Okay. Anybody else want to share something about it? What are the causes of HIV? So basically, HIV is spread through the contact with the genitals, such as we can say during the sex without the protection, or typically this type of infection is called sexually transmitted infection, जिसको हम STIs भी बोलते हैं. Another reason is like it is spread through the contact with the blood, such as when people share needles or syringes. It is only possible for a person like with the untreated HIV to spread the virus to a child during the pregnancy, childbirth, or the breastfeeding. If the mother is having HIV and he is going to deliver the child, then definitely child is at a higher risk of developing HIV. And there is no cure for this HIV and AIDS. Yes, there are medicines. Sir, if mother is taking medication, then also is it possible that she will transmit the virus to the baby through breastfeeding? There are chances. There are high chances that the child will get after medication also. Medicines also. रिस्क है, ठीक है, श्योर नहीं है बट रिस्क होता है. Excuse me, sir. Yes. Sir, is it possible that HIV is untreated in all cases, or in some particular cases? Like you are telling that it may be untreated disease at the time of it's a part of baby and mother, or in every part it's untreated. No, there is no cure for this HIV and AIDS. Okay. अगर मदर को है तो डेफिनेटली, अगर बच्चे को है तो बच्चे को भी, और अगर किसी इंडिविजुअल को होता है तो भी अनट्रीटेड ही रहेगा सर? हाँ, किसी को भी हो. Okay. There is no medicine for this. Okay. It's a chronic condition, chronic disease जिसका कोई इलाज नहीं है मेडिकल साइंस में. Okay. But with the help of medicines, you can control the infection. Okay. ठीक है, and like you can keep the disease from getting worse. मतलब उसको आप, एक होता है ना कि मतलब अगर आप मेडिसिन नहीं ले रहे हैं तो इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और मतलब आपकी बॉडी जो है मतलब बहुत बहुत अलग तरीके से रिएक्ट करेगी. अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं तो आप प्रोसेस को स्लो कर देंगे, बॉडी में इन्फेक्शन बहुत ना के बराबर होगा बट लेकिन ना के बराबर होगा. ओके, ठीक है. ओके सर. ऑल्दो दिस, अभी बहुत सारी एंटीवायरल ट्रीटमेंट्स आ गए हैं HIV के लिए, एड्स के लिए नहीं, HIV के लिए, विच रिड्यूसेस द चांस ऑफ लाइक एड्स डेथ अक्रॉस द ग्लोब. Although there is an ongoing efforts by the scientists and by the researchers to prevent this or to treat this HIV/AIDS. What are the symptoms? Because the symptoms the person will be, because more importantly because symptoms जो है वो depend करता है person to person as well as the phase of infection, कि किस phase में है infection के. If the person is in like very primary phase of infection, जिसे हम acute HIV भी बोलते हैं, उसके symptoms अलग हैं. If the person is in symptomatic, जहाँ पे मतलब पूरी तरह से डेवलप हो चुका है HIV, वहां पे symptoms थोड़े अलग होते हैं. चलो, but anyway, like what are the like symptoms of? Sir, maybe the loss of weight.
जैसे एज यू टोल्ड कि इम्यून सिस्टम बहुत ही ज्यादा वीक हो जाता है तो माइट बी लॉस ऑफ वेट. ओके. और सर रिगार्डलेस ऑफ द स्टेज, जैसे आप बोल रहे हैं कि डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, तो क्योंकि यू मेंशन कि इम्यूनो डिफिशिएंसी होती है, तो सर जनरल लेथार्जी रहेगी ऑलवेज बॉडी में, एंड ससेप्टेबिलिटी टू इन्फेक्शंस एंड अदर डिजीजेस आल्सो. Okay. So the patient is most likely to catch all the seasonal flus as well as just tuberculosis or fungal infections like this. So at a very primary stage, Loss of appetite can be one of the symptoms. right, loss of appetite. So at a very primary stage, when the people infected by HIV, he or she might get the flu-like illnesses within the 2 to 4 weeks after the virus enters the body. Okay. And the person will start showing the other symptoms like fever, headache, muscle aches, joint pains, rashes on the body, swollen limb glands, diarrhea, weight loss, भूख नहीं लगेगी, cough, cold, night sweats. And these symptoms at a primary stage are like very mild, that the person might not notice them. क्यों? क्योंकि ये बहुत अभी प्राइमरी स्टेज में है. आपका जो वायरस है वो मतलब आपके जो इन्फेक्शन है वो पूरी तरह से फैला नहीं है बॉडी में, इसीलिए the amount of virus in your, like in the blood stream of the concerned person, that is called viral load. और जैसे जैसे इन्फेक्शन बढ़ेगा, this primary infection will lead to the next stage, which is called So chronic HIV. how does it affect on sleep? How does it affects on sleep? Sleep can be affected or it will be normal. Sleep. नहीं, स्लीप तो अफेक्ट होती है डेफिनेटली. आपको बहुत सारी प्रॉब्लम साथ में आती है ना, एक के साथ एक दूसरी प्रॉब्लम जुड़ी हुई है. Okay, sir. और जो मेडिकेशन है, अगर इफ द पर्सन स्टार्ट लाइक getting the medication at the primary stage, then definitely there are chances of reducing the infection in the body. But once it will develop into the clinical stage of the chronic HIV, it's very difficult to control the infection in the body. And the body will start showing the symptoms like fever, fatigue. आपके जो lymph glands हैं वो सब उसमें सूजन आ जाएगी, डायरिया होगा, बहुत ज्यादा वेट लॉस होगा बॉडी में. Sir, the symptoms of HIV and AIDS both are same. हाँ, Symptoms of HIV and AIDS both are same. हाँ, सिम्टम्स मोर और लेस सेम ही होते हैं, ज्यादा चेंजेस नहीं होते हैं. यहाँ पे आप सीवियरिटी, सिम्टम्स की सीवियरिटी बढ़ जाती है. Okay. निमोनिया इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट सिम्टम. ये सब HIV के सिम्टम्स हैं, एंड दीज सिम्टम्स आर लीडिंग टू दी एड्स. तो सर आप ये कहना चाहते हैं कि अगर ये कंट्रोल नहीं किया जाए HIV एक लेवल पे तो ये एड्स का फॉर्म ले लेता है. बिल्कुल बिल्कुल. सी HIV ही बाद में जाके एड्स बनता है. HIV क्या है? वायरस है.
वायरस जब आपकी बॉडी में जाता है, बॉडी में वो पूरे बॉडी के इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है, इन बॉडी में इन्फेक्शन आने स्टार्ट हो जाते हैं आपके। उसके बाद मे बी इट विल टेक अराउंड लाइक 4-5 years और मे बी दैट 6 or 8 years टर्न इनटू द एड्स। सो सर, इसका HIV का डायग्नोसिस ब्लड टेस्ट के थ्रू होगा? बिल्कुल, ब्लड टेस्ट ही होता है, ब्लड टेस्ट का हम्म प्राइमरी हम्म टेस्ट। ओके। सो बेसिकली जो जो आपने सिम्टम्स बताया, ये जैसे कोई अगर ऑब्जर्व करता है अपनी बॉडी में चेंजेस, तो फिर दे शुड गो फॉर अ ब्लड टेस्ट एंड देन इट कैन बी डायग्नोस्ड। राइट, सी अभी तो डॉक्टर्स किसी भी चीज, अभी आप देखेंगे हॉस्पिटल्स में नाउ ट्राइंग लाइक आप कोई भी आप किसी भी चीज के लिए ट्रीटमेंट के लिए जाएंगे तो डेफिनेटली जो डॉक्टर है वो HIV का टेस्ट लिखता है नॉर्मल रूटीन में, लाइक बिफोर द सर्जरी। लाइक अगर आप सर्जरी के लिए जा रहे हैं तो बिफोर द सर्जरी डॉक्टर विल रिकमेंड द HIV ब्लड टेस्ट। ओके। ओके, सर विजुअल अपीयरेंस से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इफ द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम HIV और एड्स और नॉट? नहीं, ठीक है, बहुत सारे इसकी मिसकंसेप्शन भी हैं, ठीक है, दैट आल्सो यू शुड नो कि मतलब साथ में रहने से फैलता है, छूने से फैलता है, ठीक है, साथ में खाने से फैलता है, साथ में रहने से फैलता है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। ओके, यू शुड आल्सो नो द प्रेवलेंस एंड ऑल। लाइक अब जब एज अ काउंसलर व्हाट इज योर रोल? एनी सर जब आइडिया? उसे सर जैसे उसे पता चल गया कि मुझे HIV है, वो अब उसके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स जो हैं वो खराब हो रहे हैं, वो एंजाइटी डिप्रेशन में जा रहा है, तो वो आएगा कि मुझे हेल्प चाहिए, मतलब क्या करना चाहिए। तो हम उसे काउंसल करेंगे कि हाँ ऐसे करने से नहीं होगा, वैसे मतलब इन चीज़ों से नहीं फैलता है, या उसकी फैमिली को काउंसल कर सकते हैं कि वो उसके साथ कैसा बिहेव करे जिससे कि उसकी जो भी मतलब लाइफ है, या वो मेडिकेशंस वो अच्छे से ले कि आगे उसकी लाइफ है, वो मेडिकेशन लेगा तो उसमें कुछ सुधार आ सकता है, मतलब एक एक टाइम लिमिट तक तो वो जी सकता है, तो जितनी भी जिंदगी वो जी रहा है उसे अच्छे से जिए, मतलब इस तरह से हम उसको काउंसल कर सकते हैं, समझा सकते हैं। yes, you सर can वो you जब can उसको mobilize the family, you can make them aware about the entire things about the HIV or AIDS and what treatments they can go for, what are the different agencies where they can enroll himself or herself for the help or for the emergencies and all. बट इससे ये सब चीजें आपको भी पता होनी चाहिए। सर उसको जब ये प्रॉब्लम होगा, जब उसे पता चलेगा कि मुझे ये डिजीज है, तो उसमें एक नेगेटिविटी या डिप्रेशन का कंडीशन आ जाएगा। उस चीज को बिल्कुल रूल आउट करने के लिए हमको उसको पॉजिटिविटी की तरफ ले जाना होगा। उसमें कुछ मेडिसिनल हेल्प लगेगी और कुछ साइकोलॉजिकल हेल्प लगेगी। और अगर जैसे बहुत सारी चीजें, जैसे एनजीओज वगैरह होते हैं, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें पेशेंट को इंडल्ज रहना चाहिए, उस तरह से हम उसको गाइड कर सकते हैं। सी आपका जो एज अ काउंसलर रोल है वो प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट दोनों में ही है। अगर मैं किसी भी एक नॉर्मल पर्सन को बोलता हूँ कि यू हैव टू गो फॉर द HIV टेस्ट, HIV एड्स ब्लड टेस्ट, आप सोचिए कि मतलब एक नॉर्मल पर्सन भी बहुत डर जाएगा कि मुझे क्यों जाना है। हुँ? उसके अंदर एक फियर हो जाएगा, एक एंजाइटी आ जाएगी कि मतलब ऐसा ना हो कि अगर हो गया तो क्या होगा, कैसे होगा, मतलब वो खुद सर शॉक में आ जाएगा, एक नॉर्मल, बिल्कुल एक नॉर्मल लेमैन के लिए। और पोस्ट टेस्ट, suppose in case if the client is find positive, HIV positive, then
डेफिनेटली fear, anxiety, depression, guilt, anger, frustration, fear of death, सब उसके अंदर डेवलप हो जाएगा. Here's your role. अब यहाँ आपका रोल आता है. You have to counsel that person. You have to counsel the family, entire family. You have to tell them कि okay, इस स्टेज पे आपको ये करना है. There are 3 स्टेज बेसिकली. वन आपका जब जैसे मैंने बताया था प्राइमरी स्टेज होता है, एसिम्प्टोमेटिक स्टेज जहां पे कि सिम्टम्स डेवलप नहीं होते हैं, सिम्प्टोमेटिक स्टेज, ठीक है, जहां पे पूरी तरीके से सिम्टम्स आ जाते हैं. देन एट द एंड ऑफ द लाइफ स्टेज. बट इस स्टेज में भी बहुत टाइम लगता है. ये तीनों जो स्टेज हैं, ये ऐसा नहीं कि मतलब आज पॉजिटिव आया, आपका कल जो है वो एसिम्प्टोमेटिक स्टेज आ जाएगा, एक हफ्ते बाद सिम्प्टोमेटिक स्टेज आ जाएगा, तीसरे हफ्ते में डेथ हो जाएगी. एट द इनिशियल लेवल जहां पे मतलब अभी कोई सिम्टम्स नहीं है, एसिम्प्टोमेटिक स्टेज है, अगर इफ यू फाइंड द पर्सन HIV पॉजिटिव, then you should mobilize him or sensitize him so that he will start taking the medicines or proper treatment, and that treatment will help him किस चीज में, to reduce the infection in his body. So it will take time. तो वो जो टाइम था 8 से मतलब 6 से 8 साल 10 साल का, वो जो है वो आपका और लंबा हो जाएगा, 15 साल 20 साल हो जाएगा. ठीक है. So with the help of medicines, he or she can lead his life in a better way. Okay. Sir, on any stage, मतलब ये इतना severe हो सकता है कि it can cause death. Ultimately death ही होना है बच्चे इसमें एंड में. हाँ, ये इनक्योरेबल है और जेनेटिक डिफेक्ट्स भी हो जाते हैं इसमें, तो इसमें डेथ ही होएगा लास्ट में. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. ठीक है. लास्ट स्टेज ही डेथ स्टेज, द लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ, जिसे हम डेथ स्टेज भी बोलते हैं. ये नहीं, ऑटो इम्यून डिजीज होती है, तो इस वजह से डेथ ही होना हो जाता है इसमें. बचने का चांस नहीं है. लाइफ स्पैन थोड़ा इंक्रीज हो सकता है, बट इसमें बच नहीं सकते. Right. But that is only possible when the person will start taking medicines and he or she start get into the proper treatment. Okay, clear है? Yes, sir. सर एक डाउट और है. हाँ, सर, हाँ. where can you find the in the blood report that you have HIV? क्या चीज? सर, ब्लड रिपोर्ट में कहाँ पे दिखेगा कि you have HIV? HIV का टेस्ट होता है. स्पेशल टेस्ट होते हैं. तो ब्लड टेस्ट होता है, जैसे आपका CBC और RBC और सब पर नॉर्मल जो रूटीन टेस्ट होते हैं. HIV का एक स्पेशल टेस्ट होता है. अगर वो पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब है कि आपको HIV है. ठीक है. वो तो जैसे नॉर्मल ब्लड टेस्ट होता है वैसे ब्लड टेस्ट होता है इसका, कोई भी करा सकता है. और वो अगर कभी कभी जैसे मतलब कभी कभी होता है कि इफ द क्लाइंट इज फाउंड पॉजिटिव इन फर्स्ट ब्लड टेस्ट, वो उसको रिकन्फर्म करने के लिए दोबारा से ब्लड टेस्ट किया जाता है. यस सर, आई वुड लाइक टू ऐड कि इसमें एक रैपिड टेस्ट होता है जो कि एक किट टेस्ट होता है. जैसे कि यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट होता है, वैसे एक किट टेस्ट होता है जिसे रैपिड टेस्ट बोलते हैं. उसका कंफर्मेशन एलाइजा टेस्ट होता है. राइट. एंजाइम लिंक्ड. एंड उसका भी एक कंफर्मेटरी टेस्ट होता है जिसे PCR बोलते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट. PCR. राइट. थैंक यू फॉर एडिंग दिस इंफॉर्मेशन. राइट सर. ठीक है. क्लियर है ये? यस सर. चलिए. सेकंड इज एजुकेशनल वोकेशनल काउंसलिंग. 5 मिनट ब्रेक लें, थोड़ा सा पानी वानी पी के फिर दोबारा बैठे. यस सर. ठीक है. ओके, थैंक यू.
Okay. What about educational counseling? Educational and vocational counseling? Sir, educational counseling is given for making the students decide what they want to study in future, Right. So taking their basically, inputs, their ideas, their the subjects they like and their dislikes. It is the counselor helps the students to do that, to do the yes, yes. selection part. So educational counseling, they're also known as school counselors. आपने सबने सुना होगा, स्कूल में काउंसलर्स होते हैं हर जगह. So educational Yes, sir. counselors basically a counselor who works with the school children in a school environment, right? सर एजुकेशनल स्कूल एनवायरनमेंट में जो काउंसलर होते हैं वो स्कूल में जो स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं या जिनकी लर्निंग डिसेबिलिटी होती है उनको भी हेल्प करते हैं। तो आई वांट टू आस्क कि ये दो अलग अलग टाइप हो गए ना, एक तो वो जो करियर गाइडेंस के लिए होते हैं और एक वो जो ये काउंसिल करते हैं कि मतलब I'll जो come on that, इश्यूज right? रिजॉल्व करते हैं। या See, depend करता है, ऐसा नहीं है, मतलब sometimes schools hire them to assist special need children with their studies and provide career counseling based on the options which are available to the students based on their personal hobbies and all. Sometimes schools tend to hire the special educators. Sir, up to there is, as per the government rule, every school has to have a Special counselor educators. for special children. Yeah, Right, special right, educators. So, what right. is the difference between this? There is difference between special educator and the School educational counselor. counselor. Yeah, school Definitely, counselor. there is a large gap between both the two professions. Special educators basically are trained professionals, like who are trained to teach the children with the different disabilities. Okay, as whereas the school counselors are not trained professionals to teach the children with the disabilities. School counselors basically there to provide the career counseling. They are provide to deal with the students with their troubles, not there to teach them. So the special educators teach them, जहाँ पे school counselors उनको पढ़ाते नहीं है. So basically इनका what the कोर्स अलग होता है सर, आई सपोज बिल्कुल इनका कोर्स अलग होता है ना, दोनों का स्पेशल कोर्स अलग एजुकेटर का होता है. कोर्स अलग होता है। राइट, दोनों का कोर्स भी अलग होता है. स्पेशल एडुकेटर्स आप तभी बनते हैं व्हेन यू हैव द डिग्री ऑफ बीएड इन स्पेशल एजुकेशन with a different specialization, where the school counselors work with the students, especially with the students who are suffering from the different issues like maybe the depression, anxiety, or maybe the other problems because of their personal issues, maybe the domestic abuse or maybe the divorced parents or maybe the learning disability sometimes, so that the child will overcome from this serious scenarios which are affecting their personal growth. So basically जो school counselors होते हैं, they will look into the personal, social and behavioral problems जो कि बच्चों के होती हैं. Whereas the special educators are like any other teachers who are there in the school to teach the children with disabilities. Clear है? जी सर, थैंक यू। Yes. And what about the vocational? See, school counselors or the vocational counselors, even these vocational counselors basically
they are there to give advice or give counseling for or helping the students in deciding their career, in deciding their vocations. तो vocational that means career counselors को Career vocational counselors, counselors कहते हैं. right? Okay. Vocational counselors and career counselors. ठीक है जी सर, थैंक यू. आपकी जो स्कूल काउंसलर्स होते हैं बेसिकली दे वर्क विद चिल्ड्रन at an elementary level, at a higher school level, and vocational counselors will look into the और जिनको हम करियर काउंसलर भी बोलते हैं और एम्प्लॉयमेंट काउंसलर भी बोलते हैं, दे आर बेसिकली दे वोंट हायर्ड बाय द स्कूल्स, दे run their own businesses from their own for different platforms. What is the role of school counselor basically? आप मुझे बताइए, आप क्या समझते हैं स्कूल काउंसलर क्या करते होंगे? आप लोग, I think if you're working in the school premises, that definitely सर assess करते हैं. क्या करते सर हैं? असेसमेंट बेसिकली फर्स्ट उनका लेवल ऑफ असेसमेंट होता है. वो टीचर्स को भी गाइड करते हैं कि कैसे टीचर्स को असेस करके उनको रेफर करना है. स्टूडेंट्स को पूरी लिस्ट क्लासेस की लिस्ट बनती है कि कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स हैं, क्या फेस कर रही हैं टीचर्स, किस तरीके के इश्यूज. उनको कुछ गाइडेंस भी देते हैं टीचर्स को कि आपको किस तरीके से असेस करना है कि हाँ ये बच्चा काउंसलर के पास जाने के लिए एप्ट है. तो फिर उसके बाद वो बच्चा काउंसलर को रेफर करते हैं और काउंसलर डिसाइड करते हैं उनको उसकी उससे मतलब डिस्कशन करके और उसके साथ सेशंस बैठ के बात करके डिसाइड करते हैं वेदर दिस चाइल्ड इज एप्ट फॉर द टू कम टू नीड फॉर काउंसलिंग और नॉट. और उसके बाद उसकी काउंसलिंग एंड ऑल काउंसलिंग सेशंस एंड द काउंसलर ओनली discusses it with the parents and tries to resolve the issues जितना हो सके. So that's the work of a school counselor, if I'm not wrong, sir. Right. Absolutely true. Sir, one more thing is there, I suppose कि sometimes जो एक level upgrade होता है, जैसे कि बच्चे first to third, फिर third to fifth, फिर sixth to eighth and ninth onwards. तो जैसे जैसे बच्चों का level upgrade होता है, उसी तरीके से बच्चों को ना counselor एक support देता है. आई थिंक जो कि एक लेवल अपग्रेड होने के बाद काउंसलर्स बच्चों को काउंसिल करता है, ये मतलब दैट इज नॉट फॉर सम स्पेशल चिल्ड्रन, दैट मस्ट बी फॉर द होल क्लास और द होल सेशन. Right. At the initial level, definitely counselor do assessments. Yes. To provide the interventions in the class. Yes, sir. As well as these assessments will also become a guiding principle for the other teachers also. Like what different pedagogies they can opt for the children in the classrooms, and if they find any student who is having the problem with the subjects or other issues, they directly refer them to the counselor, and the counselor will start their interventions with such children. And in these interventions, yes, their parents must be involved, और पेरेंट्स को भी काउंसिल करते हैं काउंसलर्स. और as soon as when we talk about the secondary education, when the child get into the ninth up to ninth standard, 9th, 10th, 11th, 12th, yes, their role is become more vocational, so that they can guide the students or the children to decide upon their career growth. Yes, sir. Yes. सर एक डाउट है, पूछूं? हाँ, बिल्कुल पूछिए. जैसे जो कुछ लोग होते हैं ना, जो जैसे बच्चे जो होते हैं किसी तरह की डिसेबिलिटी से, या जैसे जो बच्चों में कोई कॉग्निटिव जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो उनसे डील करते हैं, वो भी काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट ही होते हैं. जो जैसे कुछ बच्चे बुलिंग का शिकार हो जाते हैं, जिससे उनमें लो कॉन्फिडेंस और हाइपो एक्टिविटी हो जाती है, कुछ भी नहीं करते हैं.
तो इस तरह के भी हम काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट ही होते हैं जो उनको काउंसिल करते बिल्कुल, जो स्कूल काउंसलर होते हैं बिल्कुल वो डील करते हैं उन सब चीजों को। हैं। अच्छा अच्छा। ना? ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Any other idea about the see and there are because जब आप बच्चों के साथ काम करते हैं तो मतलब you have to be very careful because you should know the child rights क्या है, child protection क्या है. What are the child rights in India? Sir, the most important is right to education, RT जिसकी हम बात करते हैं. Okay. And then we do have POXO also. That's a law though. But children must know about this as well. That जो भी कोई under 18 है, so no one can, physically or through gestures can harass them. So if someone is trying to do it, or even, whether it's an adult or, lower than 18, they would come under POXO. Sorry, your voice is breaking, sir. See, if when you're working with the child, young children or the children, okay, but you should know that India is a part of UN Declaration of Rights of the Child, right? Hanji, sir. Sir, are we talking here about right to development, right to protection, and participation? These are the different rights a child must have in India. Yes. Every child must have these rights. As we are signatory to the UN. Right to survive, right to protection, right to participation, right to development. Yes, sir. और ये कौन इंश्योर करता है हमारे इंडिया में? कोई बॉडी है? Is there any body who ensures the child rights? The government. Child welfare. हाँ? Child welfare. Ministry of Women and Child Development. ये तो मिनिस्ट्री है नहीं. There's an autonomous body in India that is called NCPCR. NCPCR, yes. National Commission for Protection of Child Rights. Protection of Child Rights, yes. Hanji. आप लोग स्कूल्स में काम कर रहे होंगे तो डेफिनेटली इस बॉडी के बारे में जानते होंगे आप लोग. और इसका अपना दिल्ली का स्टेट ऑफिस हर स्टेट में अलग DCPCR है दिल्ली में. So there are different rights about the child, like survival rights, protection rights, because every child have these basic rights. Right to education तो बहुत बाद में आता है. RTE. Okay. Yes, sir. Thank you. And there are different parities where the child is very much vulnerable in different conditions and different situations. Who is vulnerable child? Sorry, sir. Repeat the question, please. Like who is vulnerable child? Sir, the child who cannot protect himself. The child who is unable to protect himself. Okay. And is dependent on others. सर वो बच्चे जो नॉर्मल बच्चों से थोड़ा सा कम एक्टिव रहते हैं वो बच्चे वल्नरेबल रहते हैं. See, vulnerability. हाँ बोलिए स्मृति जी. हाँ जी. So sir, basically सर ये एक अम्ब्रेला टर्म हो जाएगा vulnerable children. So हम यहाँ इंक्लूड कर सकते हैं all the children who are difficult circumstances. So आपके underprivileged children, street children who have a single parent or who have no parents. Exactly. Sir, children of parents affected by HIV, yeah, who themselves are affected by HIV.
चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, तो सर काफी सारी कैटेगरीज इसमें जहाँ पर बेसिकली उनकी राइट्स वायलेट हो रही हैं। बिल्कुल, see it's an umbrella मतलब it's a kind of an umbrella under which you can categorize different categories. So within the parameters of vulnerability you can come up with the different forms like vulnerability in terms of age, in terms of disabilities, in terms of mental disabilities, in terms of like powerlessness, जहाँ पे फैमिली का इशू है या सिंगल पेरेंट है या पेरेंट नहीं है. See, even would those children also come in this category, like where parents are not available, like though Yes. they are, but you know they are not available for their children. They are always busy, maybe in their own work or you know in social, I would say, obligations. So as a counselor, your role is to be counsel in these areas also, especially in terms of like child abuse. बहुत सारे केसेस आते हैं चाइल्ड अब्यूज के. यस सर. CWCs में Sir, working with the children with the abusement, working with the child who are on streets. Street children, because streets पे बहुत problems होती हैं street children के साथ, and they are very much prone to develop different STDs, STIs, HIVs, violence. Yes, आप कुछ बोल रहे थे, बताइए. सर मैं ये कह रही थी कि स्कूल में जैसे सेल्फ हार्म के भी बहुत केसेस आते हैं, जैसे लाइक children who are like, if they are not mentally stable, it's not that they do have any disability or disorder, but yes, they cannot take any sort of rejection, or they have friends issues, or they have something related to academics, so they start harming themselves through cuts or any other thing. So I think school counselors have to counsel those children as well. And if you talk about exam anxiety, Yes, as a school counselor, definitely you should have talk with the children before getting into the exams and all, about how they can overcome from their fear, from their exam, how they can handle their exam anxiety. See, when we work with the children, you have to be very careful in terms of, because every child is unique in their own way. They have their own pace of learning, their pace of growing, their pace of developing, and every child is different from another. So it's never compare a child with the another child. Even at home also, like for a mother or for a father, we should never compare our child with the other child, because every child have their own pace of development and learning. But हम ऐसा कर पाते हैं? सर नहीं हो पाता. जनरली हम लोग बच्चों को बोल देते हैं. अगर हम नहीं बोलते हैं एट होम तो कोई गेस्ट होते हैं वो बोल देते हैं, तो बच्चे को, नहीं तो कोई ट्यूशन में जाते हैं बच्चे, वहां बच्चों को बोल देते हैं कि आपकी बड़ी बहन तो बहुत अच्छी है, वो तो देखो कितना अच्छा कर रही है, और आप देखो वो तो ये बन जाएगी, आप क्या बनोगे. तो दिस इज वेरी नॉर्मल एट होम. ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. From that point of time only the child will start developing fear, anxiety, depression. तभी बच्चे जो है वो सुसाइड करते हैं, तभी बच्चे जो है वो अपने आप को हार्म करते हैं, क्योंकि वो प्रेशर फिर उनको, because what we are doing is we are doing unsaid, like creating a pressure in their mind. हम बोल नहीं रहे हैं बट फिर भी एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है. So you have to be, as a counselor, you have to be very careful when you are working with the young children.
ठीक है, क्लियर है? आप लोग कुछ सर पूछना एक चाहते हैं? हाँ हाँ सर एक क्वेश्चन पूछना है। हेलो। हाँ हाँ पूछिए। हाँ सर, जैसे मुझे काउंसलिंग में इंटर्नशिप करना है अभी, तो जो साइकोलॉजिस्ट है वो कंप्लीटली ब्लाइंड है और आईसीआई रजिस्टर्ड भी है और लगभग 20 साल से एनजीओ चला रहे हैं। तो क्या वो ब्लाइंड होने के बावजूद भी उनके पास में इंटर्नशिप कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हाँ, अभी क्योंकि वो, हाँ सर, नहीं वो चलिए मुझे बोल रहे थे कि ब्लाइंड इसको हम बाद में ब्लाइंड डिस्कस होने करते हैं क्लास के बाद। हाँ, हाँ चलेगा, ओके सर। आप लोगों को कुछ पूछना है विद रिगार्ड टू द काउंसलिंग विद द चिल्ड्रन एंड एजुकेशन वोकेशन ऑल? ऐसी कोई चीज जो आपको नहीं समझ में आई हो और आपको काफी कुछ पढ़ना भी पड़ेगा? ऐसा नहीं कि मतलब यू एंटायरली डिपेंड ऑन द लेक्चर्स। ठीक है, यू शुड स्टार्ट रीडिंग बुक्स, रेफरेंस अदर बुक्स। ठीक है, देन ओनली द थिंग्स विल बी क्लियर। सर कोई ऐसी बुक, हेलो, हाँ हाँ बच्चे, कोई ऐसी बुक है जिसमें हमारे कोर्स के अलावा और एडिशनल इंफॉर्मेशन हो काउंसलिंग साइकोलॉजी में ही? काउंसलिंग साइकोलॉजी की बहुत सारी बुक है, आप डिफरेंट डिफरेंट बुक्स यू कैन रेफर। सर कोई आप हिंदी में बेस्ट बुक काउंसलिंग के लिए? हिंदी में हाँ, कोई अच्छी, बहुत अच्छी बुक। बहुत अच्छी बुक हिंदी में आई थिंक कोचर की बुक है हिंदी में, शायद कोचर, उन्होंने लिखा है द बेसिक्स ऑफ काउंसलिंग के बारे में। कोचर। हाँ सर कोई Sir, I have a आपकी कोई question. प्रेजेंटेशन हो, जैसे आपने लास्ट टाइम प्रेजेंटेशन एक दिखाई थी, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी, वो शेयर हो सकती है? नहीं, आज की मतलब मेरे आज तो मेरे पास कोई प्रेजेंटेशन नहीं है मैम। नहीं आज नहीं सर, इससे पहले आपने जो फर्स्ट क्लास हुई थी 13 को, वो तब आपने अच्छा बहुत वो, अच्छी एक प्रेजेंटेशन दिखाई थी, वो ठीक है कैसे ठीक, हमें मिल सकती है? वो आप वो सब रिकॉर्ड हुआ होगा, दैट रिकॉर्डिंग विल बी, यू विल गेट द रिकॉर्डिंग फ्रॉम द इग्नू इटसेल्फ। सर मैंने भेजा था मेल आप इग्नू में RC3 में, बट आई डिड नॉट गेट द रिप्लाई फॉर द रिकॉर्डिंग। मे बी आई सेंट आफ्टर द क्लासेस यू विल गेट द रिप्लाई। ओके। चलिए, अभी नेक्स्ट आपका जो है Sir, दैट I have इज, a question. हाँ हर्षिता। सर हमें जो इंटर्नशिप रिपोर्ट बनानी है वो टाइप्ड होनी चाहिए या हैंड रिटन? अच्छा, इसको बाद में डिस्कस करते हैं, पहले अभी आपका ये लास्ट यूनिट एक बचा उसको पढ़ लेते हैं, काउंसलिंग विद रिगार्ड टू द एडिक्शन। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है एडिक्शन और लाइक एडिक्शन एज वेल एज एंजाइटी। आप सबको पता है एंजाइटी क्या है, एंजाइटी डिसऑर्डर क्या है, सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी क्या है? सर एक बार दोबारा रिपीट करना, क्या पूछा? आवाज नहीं आई थी। व्हाट इज एंजाइटी, व्हाट डू यू मीन बाय एंजाइटी? सर हिंदी में बोले तो एंजाइटी घबराहट होना, किसी भी काम को करने से पहले घबराहट होना। घबराहट होना, ओके। एनीबॉडी एल्स? Sir, you सर are thinking देखिए, about the task, whatever the task you are assigned, and you are very much worried for the task before doing that. Must be anxiety. Or ओके, maybe एनीबॉडी एल्स? ये शरीर में थकान होना। तो उसके कॉग्निटिव और फिजिकल दोनों होते हैं, मतलब हम फैक्टर्स देख सकते हैं, जैसे कॉग्निटिव में हमें मेमोरी की प्रॉब्लम, अटेंशन नहीं दे पाएंगे, फोकस नहीं कर पाएंगे किसी चीज पे, स्लीप डिस्टरबेंस होगी, अच्छा और ओके, तो सर फिजिकली हम थकान महसूस होगी हमेशा, और ओके शॉर्टनेस ऑफ ओके ब्रीथ। ओके ओके, ये आप मुझे सब सिम्टम्स बता रहे हैं, आपने मुझे बताया नहीं एंजाइटी क्या होती है, आप मुझे सब सिम्टम्स बता रहे हैं कि ये सिम्टम्स हैं। सो बेसिकली Sir, can we say मेन कि सिम्टम जो हमारे suppressed emotions होते हैं वो जब हमारे बाहर आते हैं तो that can cause that is in the form of anxiety. okay, so basically anxiety is an apprehension state of our mind in which we have fear and worry
And anxiety is a combination of both psychological and physiological symptoms which lead to the stress. स्ट्रेस हो सकता है, फिजिकल डिस्कम्फर्ट हो सकता है, हाँ फियर हाँ हो मैडम। सकता है, and yes, the symptoms of anxiety disorders or anxiety is very much ranging from the physical as well as to the psychological or emotional problems. And like very much physical manifestation of anxiety is a panic attack. पैनिक अटैक होता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, स्वेटिंग होती है, बॉडी में शेकिंग होती है, shortness of breath होती है. So these are the physiological changes happens in our body when we are anxious. Whereas the psychological manifestation of anxiety will be nervousness, irrational fear, irrational worry. नॉइज हाँ मैडम। सर आप म्यूट नहीं है तो वो आवाजें बहुत डिस्टर्ब कर रही हैं। 2 बार मैंने Okay. So the other symptoms of anxiety disorder will like nausea, dizziness, problem with the relationship, problem with the sleep, problem with the eating, communication, panic attack. उसके जो causes हैं, that is biological factors, environmental factors, temperament issues, and sometimes this anxiety will lead a person into addiction, that is alcohol or drug addiction. ऐसा होता है या नहीं होता? Because of anxiety, because of the irrational fear, or maybe because of irrational worry, the person start taking alcohol. सर एंजाइटी का मतलब ये तो नहीं जैसे कि कोई व्यक्ति हल्का हल्का महसूस कर रहा हो, कुछ तकलीफ हो रही है उसको, मतलब नर्वसनेस आ रही है और उसको पता नहीं चल रहा है कि मुझे ऐसे क्यों हो रहा है, उसका रीजन ही पता नहीं चले, मन उसको खुद नहीं पता रहता कि मुझे कोई मतलब टेंशन आ रहा है ऐसा करके। What about सर substance? हाँ बोलिए। हाँ सर, एक बार आप इसके साइकोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन सर रिपीट कर देंगे? Psychological manifestation of anxiety, हाँ जी। like emotional problems, irrational fear, irrational worry, and a persistent worry, paranoia, sometimes phobias, ठीक है सर। feeling of nervousness, feeling of worthlessness, even depression in severe cases. ठीक है सर। And as I mentioned that sometimes people tend to choose a path of alcohol or substance to overcome from these anxieties and depression or psychological problems, and slowly they'll become addicted to it. They develop addiction, and these addiction basically lead to the life-changing events in their life, and this addiction make their life more difficult. Why? Because once they become addicted to it, the anger issues, irritation, low confidence, lack of interest in daily life,
judgment issues, negative attitude, dishonesty, sometimes argumentative behavior with the spouse, with the children, or with the other people in the family problems, domestic violence, abuse, lack of intimate relationships. If it is more severe, then definitely आपका मेमोरी प्रॉब्लम्स आती हैं, हेल्थ इश्यूज होते हैं, हार्ट कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. And in some cases, it has been observed in many studies that because of the addiction, there are uh, high chances that the person get involved into the unprotected sexual activities which lead to the HIV or AIDS or STIs. What are the causes of these issues? It might be genetic, it might be biological, it might be because of the childhood abuse or trauma, or it might be because of some environmental stressors in the person's life, because of the workplace, because of the stressors at home. Sometimes maybe because of the person's temperament. So as a counselor, you can provide different therapies, like group therapies, behavioral therapies, supportive therapies, psychoeducation therapy, CBT, individual counseling, behavioral therapies. ठीक है, क्लियर है? सर आपने लास्ट में कौन सा थेरेपी बोला? ड्यूरल थेरेपी, Psycho education. psycho education, then you said CBT, then you said dural therapy. Behavioral. Okay, ठीक है. सर एक मेरे फैमिली में पेशेंट है, उनको हेल्यूसिनेशन होता है. मतलब उनको ऐसा लगता है कि कहीं दरवाजा खुला रह गया या फिर कुछ कोई आया तो नहीं, इस प्रकार से क्या लगता है? उसको तो हाँ ऐसा लगता है, तो उनको समझाना पड़ता है बार बार. तो बात ये कि दिस इज हेल्यूसिनेशन और मे बी आई थिंक ये ओसीडी की कैटेगरी में आना चाहिए मेरे हिसाब से, इफ आई एम हो नॉट रॉन्ग. सकता है ओसीडी का हो. तो उनको जिससे भ्रम होता है कि भाई कोई पैसे तो नहीं चुरा लिए, कुछ हो तो नहीं गया, कोई आया तो नहीं, तो ऐसा कुछ होता नहीं है रियल में, लेकिन उसको हमेशा ऐसा लगता है. तो मेडिसिन भी चल रही है, तो हर बार बहुत पेशेंस रखना पड़ता है अपने को, हर चीज समझाना पड़ती है. तो कभी कभी ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि अपने पेशेंट बन जाए उसके, क्योंकि हर बार समझा समझा के अपने को सप्रेस होना पड़ता है और अपने को हर चीज को पेशेंस रख के दबाना पड़ता है हर चीज के लिए. तो ऐसा लगता है कि उसका असर अपने पे हो रहा है. सी हेलो. अगर फैमिली किसी को भी इस तरह का मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, तो डेफिनेटली द साइकोलॉजिकल हेल्थ ऑफ द अदर पर्सन और द केयर टेकर इज वेरी मच वनरेबल. बिकॉज कि उनकी जो मतलब आप जैसे कि आपने बताया कि मतलब बहुत पेशेंस रखना पड़ता है, कभी कभी बहुत प्रॉब्लम्स भी होती होंगी, बहुत फ्रस्ट्रेशन भी होता होगा, बहुत एंगर भी है ना होता होगा. तो हाँ आई कैन अंडरस्टैंड दैट है ना. बट फॉर दैट यू कैन गो फॉर आप गाइड कर सकते हैं उनको कि दैट अ पर्सन कैन गो फॉर ए काउंसलिंग. ठीक है सर, काउंसलिंग भी हो चुकी है, मेडिसिन भी चल रही है, लेकिन कंटिन्यूसली अपने साथ में रह रहा पेशेंट, तो उसको संभालना और उसको साथ बात करना बहुत डिफिकल्ट है. ऐसा नहीं कि देखो, अगर आप ये सोचेंगे कि क्योंकि जब आपको पता है द अदर पर्सन इज इन पेन, ओके, तो काफी चीजें आप मैनेज कर सकते हैं. मतलब यू हैव टू बी लाइक वेरी पेशेंस इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग द मेंटल हेल्थ इश्यूज. सर आपको उसके पता लिए है कि बोलिए, उसके लिए कौन सी थेरेपी अच्छी रहेगी? मतलब उसको ये हेलुसिनेशन बाहर लाना या उसके हर चीज को
एडजस्टमेंट करना, तो उसके लिए ऐसा कोई अच्छा फार्मूला जो उसको अपन हमेशा उसको संतुष्ट कर सके, उस और उसका दिमाग में जो डाउट रहता है उसको बाहर ला सके। सी अभी ये है, आप जो बोल रहे हैं कि हेलुसिनेशन है या मतलब भ्रम हाँ है, या देखो हाँ हेलुसिनेशन है या हाँ, पैरानोइया है। भ्रम ही है, ठीक है ठीक है, भ्रम है सर। भ्रम एक इल्यूजन होता है, इल्यूजन को हम हाँ, भ्रम बोलते हैं, हेलुसिनेशन और अलग चीज होती है। अच्छा अच्छा, हाँ, ठीक है, ठीक है ठीक है। है ना। हाँ मतलब हो सकता है पैरानोइया हो सकता है आपका मतलब क्योंकि बात इस चीज के लिए मतलब आई नीड टू सी कि क्या मतलब मेडिकल किस चीज की वो मेडिसिन ले रही है या किस चीज का वो ले रही है। ठीक है, अब अकॉर्डिंगली लाइक वी कैन सजेस्ट दी डिफरेंट थेरेपीज। सर थोड़ा सा और पूछता हूँ मैं, ये जो मेडिसिन लेते हैं तो लगभग उनको 20 साल से मेडिसिन चल रही है, और डेली 4-5 कम से कम सुबह 3-4 और शाम में 3-4 गोली चलती है। तो क्या ये गोलियों का असर उसके बॉडी पे भी हुआ है? मतलब ऐसा लगता है कि उसको डाइजेशन का प्रॉब्लम होता है, उसके बाद में और बहुत सारी चीजें उसके साथ में मतलब दिक्कत आ रही है उसको, और भी फीमेल को जो मतलब होना चाहिए, जो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए वो हो रही है। तो सर ये चीजें क्या मेडिसिन से ऐसा हो सकता है? क्या मेडिसिन से होता होगा ऐसा? सी साइकेट्रिक मेडिकेशंस के साइड इफेक्ट्स तो होते ही हैं, मतलब हर मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स होते हैं। इफ द पर्सन इज टेकिंग मेडिसिन फ्रॉम लाइक लास्ट 15 to 20 years, तो डेफिनेटली बॉडी ने एक रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया होगा। ठीक है, और हाँ। डेफिनेटली उसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, हर मेडिसिन के साइड इफेक्ट होते हैं, तो वो साइड इफेक्ट्स भी होंगे बॉडी में। हम्म। तो सर ये साइड इफेक्ट से बाहर का निकला, जैसे मान के चलो कि उनको क्या हो रहा है कि जैसे साइकिल बराबर नहीं आता, उसके बाद में उसको यूट्रस में कुछ मतलब गठाने हो गई है, और उसके बाद में बहुत सारी चीजें मतलब जो संजय होना। जी, इफ हाँ यू हाँ। वांट टू रियली, हम इसको आप मुझे पर्सनली आप मुझे मैसेज कर दीजिए, कॉल कर लीजिए, दैट विल बी ग्रेट। हाँ हाँ, ठीक ठीक सर, आपका नंबर। ठीक। लाइक वी कैन डिस्कस इट ओवर द फोन। ठीक हम्म, है, मेरा ठीक। नंबर ग्रुप में ओके। है। हाँ हाँ, ठीक, ओके। ठीक है, हाँ ठीक है, ओके सर, हाँ, थैंक यू। थैंक यू। Sir, एनीबॉडी I एल्स? want to ask one thing. Is there any offline class tomorrow? हाँ, कल ऑफलाइन क्लास है शायद ना। Yes, sir. हाँ लेकिन एक्चुअली सर वो शेड्यूल में ना इट इज मेंशन बिकॉज हम